it's been really moving for me to meet a lot of young people all over the world who are not radicalized, but who understand how dangerous alienation is, because we feel it today. It's a symptom of the modern world. How do you connect in a world that is supposed to foster connections with all the technology we have, but actually it's a very lonely place, especially if you don't look or sound like you belong. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कैस अली मीर। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। जी, मेरी फेवरेट फातिमा भुट्टो, उनकी शादी हो गई है और तस्वीरें आप लोगों ने देख ली होंगी और अभी भी स्क्रीन पर चल रही हैं। अब बहुत सी बातें आज मैं आपके साथ फातिमा भुट्टो की शेयर करूंगा, क्योंकि मेरी एक तकरीब पर उनसे मुलाकात हुई थी और 30 से 40 मिनट हम लोगों ने बैठ के गुफ्तगू की थी एज अ राइटर, क्योंकि मेरी अपनी भी 3 किताबें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और आप यकीन करें कि मैं बहुत कम लोगों से मुतासिर होता हूँ, क्योंकि लोग जो नज़र आते हैं ना, अंदर से वैसे होते नहीं हैं। तो फातिमा भुट्टो से जब मेरी मुलाकात हुई और जब उनकी बातें सुनी और फिर उनका लहजा और फिर जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन की वो सारी बातें, कुछ उनसे बातें की थी मैंने सियासत के हवाले से भी, और एज अ भुट्टो एक पर्सनालिटी हैं, बेनज़ीर भुट्टो एक पर्सनालिटी हैं। लेकिन फातिमा भुट्टो, आप यकीन करें कि आप ये समझें कि जुल्फ़कार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो जो है ना, जब इन दोनों को मिक्स करेंगे आप, तो फिर फातिमा भुट्टो जो हैं वो उनकी शख्सियत सामने आती है। बहुत ही वैसे भी देखने में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, और सबसे बड़ी बात कि उनके जो नज़रियात थे कि मैं आपको नहीं बता सकता। ये पूरी हमने डिस्कशन की, बात की, जो पीपल्स पार्टी का एक सारा कुछ था। और आप यकीन करें कि आज जब ये ख़बर मैंने देखी है कि भुट्टो साहब की लाइब्रेरी में उन्होंने निकाह किया है, तो कोई अगर शक शुबहात मेरे दिल में थे कि वही अंदर से लोग ऐसे नहीं, वाकई ही वही ज़बरदस्त और बड़ी खुशी हुई। और इस तरह अगर आप क्या समझते हैं, क्या उनके पास ऐसे वसाइल नहीं थे? धूमधाम से शादी जो है वो करती और दुनिया उनको देखती। वो एक सियासी फैमिली का बहुत बड़ा नाम है फातिमा भुट्टो, लेकिन उन्होंने आजिज़ी और जो हमारे इस्लामी एक तरीक़ाकार है निकाह का, वो उन्होंने किया। और बड़ी खुशी हुई इस बात की कि शुक्र है कि कोई मतलब सियासत के हवाले से, खैर वो दूर दूर तक उनका ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि वो सियासत से इतनी नफ़रत करती थी। क्योंकि जब मैंने गुफ्तगू की, उन्होंने मुझे 1000 बार कहा कि इसके अलावा कोई बात करें, मैं सियासत के मुतालिक बात ही नहीं करना चाहती। हमने बहुत कुछ गवाया है सियासत में। उनको मैंने अपनी 2 बुक्स उस वक्त मेरी आई थी, तीसरी बुक नहीं थी मेरी, 2 बुक्स भी उनको मैंने दी थी पढ़ने के लिए। ये जनाब शादी नहायत सादगी से उन्होंने की है, और जो दूल्हे हैं इनके, उनका नाम जिब्रान बताया जा रहा है। बहुत सी दुआएँ हैं इनके लिए, अल्लाह इनकी जो एक अज़वाजी ज़िंदगी है वो कामयाब रहे और ये लोग खुश रहें। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की फातिमा भुट्टो हैं तो ये खुश ही रहेंगे। वो इतनी कूल माइंड और ऐसी शख्सियत की मालिक हैं कि ऐसा इंसान खराबियाँ पैदा कभी भी नहीं करता। अच्छा, इस बात की उन्होंने तस्दीक भी की है। ट्विटर पे उन्होंने बताया है कि मुल्की माशी हालात के पेश नज़र जो है निकाह की तकरीब नहायत ही सादगी से अदा की गई। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं जी। और ये आपको चाहिए था कि जरदारी फैमिली को भी बता देते, क्योंकि उनकी जो शादियां पिछले दिनों वायरल हुई वो तो पूरी दुनिया ने देखी, और क्या कुछ वहाँ पे रक्स और क्या कुछ चलता रहा। एनी हाउ, शख्सियत की बात है ना, इसलिए तो मैं बात कर रहा हूँ कि फातिमा भुट्टो की बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है। फातिमा भुट्टो ने यह भी अपने पैगाम में लिखा कि निकाह के अलावा शादी की कोई दूसरी तकरीब जो है वो नहीं होगी, क्योंकि वो शहाना शादी की शौकीन नहीं और मुल्क के माशी हालात भी ठीक नहीं। फातिमा भुट्टो की एज जो है वो 41 है। फातिमा भुट्टो ने अपने ट्विटर पर बताया लोगों को कि उनकी शादी जो है जिब्रान से हुई है, और इनका जो आबाई घर है 70 क्लिफ्टन में जो है ये मुनक्किद हुई। उन्होंने बताया कि ये तकरीब मेरे दादा की लाइब्रेरी में हुई, जिसमें उनके वालिद और उनके बहन भाइयों की तस्वीर भी लगी हुई थी, जबकि वहाँ पर पीपल्स पार्टी का झंडा भी मौजूद था। फातिमा भुट्टो के भाई जुल्फ़कार अली भुट्टो, उनको सभी जानते हैं, वो खैर वो एक अलग स्टोरी है। मैंने आपको कहा था कि इनकी शख्सियत जो है इस भुट्टो फैमिली में सबसे ज़्यादा डिफरेंट पर्सनालिटी जो है वो फातिमा
भुट्टो की थी, बहुत डिफरेंट। मैं आपको नहीं बता सकता कि इतनी डिफरेंट हैं, इतनी अच्छी हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और सबसे बड़ी बात, जितनी इनोसेंट हैं और जिस तरह वो बात करती हैं, और फिर उनकी जो किताबें हैं वो शायद आपने पढ़ी हों, और जिस हिसाब से उन्होंने लिखा, हम तो लिखारी की नज़र से भी ये चीज़ें देखते हैं, तो तनकीद के हवाले से भी बहुत सी उनसे डिस्कस हुई, बात हुई। तो बहुत सी मुबारक है जी। और फातिमा भुट्टो को अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे, और आने वाली जो ज़िंदगी है, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी है, उसको आप इंजॉय करें। आज से जो तकरीबन 16 साल पहले भी आप मेरी फेवरेट पर्सनालिटी बन गई थी जब मैं आपसे मिला था, और आज भी आप मेरी फेवरेट हैं। हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, बहुत सी दुआएं आपके लिए। और मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी में अगर सब लोगों की सोच आप जैसी हो जाए, फातिमा भुट्टो जैसी हो जाए, तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी इस वक्त नंबर 1 पार्टी हो पाकिस्तान में पूरी। लेकिन बहुत से मसाइल आप जैसे जानते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत के बाद जो चीज़ें आप लोगों के सामने आई और दुनिया ने जो कुछ देखा, तो एनी हाउ मैं ये समझता हूँ कि 50% भी अगर फातिमा भुट्टो जैसी सोच हो जाए इन तमाम अरकान की, तो कहाँ से कहाँ जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी होती है। बहुत बहुत मुबारक है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। And that doesn't mean that India or Turkey or Korea are innocent powers with no agendas, but our exposure to those agendas is fairly new if we're looking at an international audience. Well, The Runaways comes out in paperback in England next year in 2020 spring. It's been a really interesting experience because it came out at a very politically charged time when you did have the stories of many real-life young people who had run away to join radical groups like Daesh in Iraq and Syria. Been very interesting to talk about alongside a novel, alongside a work of fiction, but I think it's also made it quite uncomfortable. So The Runaways doesn't have an American publisher because that's not a conversation that America wants to have. The stories of young Muslims who are displaced and alienated doesn't have a lot of room in Trump's America. And that's surprising and unsurprising at the same time. It's been really moving for me to meet a lot of young people all over the world who are not radicalized, but who understand how dangerous alienation is, because we feel it today. It's a symptom of the modern world. How do you connect in a world that is supposed to foster connections with all the technology we have, but actually it's a very lonely place, especially if you don't look or sound like you belong. Well, you know what I think is one of the great cultural products which is little known outside today, actually doesn't come from India at all. I would say it's Pakistani television dramas over the years. But Pakistani theatre and Pakistani television dramas have a quite rich history. In the 1970s and 80s, under the darkest period of dictatorship that Pakistan has ever faced, when a CIA-backed dictator, General Zia-ul-Haq, essentially brutalized Pakistani society, censoring the media, prescribing amputations as a punishment for theft. You had great movements of resistance against that oppression that came through not just theatre, poetry, music, art, but a lot in television. They were written in a very classical, beautiful Urdu. And they tackled not just the political system, but the social systems and the social ills of Pakistan. And I think that actually, if we're looking for sophisticated art forms that have a powerful political center, I would say it would come from Pakistan. In the early 2000s up till today, Pakistan has started to produce more films. They're not cut from the same cloth. So there were some famous early attempts after 9/11 again that addressed the issue of being Muslim abroad, the idea of stereotyping. But otherwise, I would say that Pakistani films or cinematic products are still in their early days. But it doesn't quite have the same history that the old TV dramas do. There's so many countries actually whose cultural products are not just fascinating, but have far-reaching implications, so I sadly couldn't fit into the book. I think if we look at Nigeria,
Nollywood is making amazing strides in the world of streaming. If you're looking at sophisticated cultural products, then you can't have a conversation without Iran. If we're talking again about music, you know, that comes from not just places like Korea, but the Chinese are moving ahead. You know, the head of Warner Brothers Music has said already, I mean, several years ago, that people will want to break into China the way they once wanted to break into America. I would say the Chinese are certainly one to watch. I think they're going to be an enormous force in the world of global culture. But the truth is, it's happening everywhere. There are lots of micro little explosions. There is no center anymore. We live in a multipolar world, and culture reflects that.